Today I am going to discuss about the topic acceleration, and in the previous video already I have discussed about the distance, displacement, speed, velocity, and now I am going to discuss about the acceleration. And again I would like to remind you, in velocity I was given the average velocity and instantaneous velocity. And here also I am going to discuss about the average acceleration and instantaneous acceleration. But before this one, first I am going to tell you what is the acceleration. I hope maybe all of you know the definition of the acceleration. Acceleration is what here? The rate of change of velocity is called acceleration, or the change in velocity in a unit interval of time. That one is called what here? Acceleration. And you can write here acceleration is equal to change in velocity upon time interval. Generally, what notation we use for acceleration? Generally, we use the notation A. And suppose with respect to any reference point, hmm, at time t1, the velocity of an object is v1 at time t1, and the velocity becomes v2 at time t2. So in time interval t2 minus t1, in this time interval, the change in velocity becomes v2 minus v1. So in time interval t2 minus t1, change in velocity v2 minus v1. So the average acceleration, which is given by this a bar means average acceleration, is equal to change in velocity v2 minus v1 upon time interval what is t2 minus t1. And this change in velocity v2 minus v1 is also written by delta v. मैंने पहले बताया था change को हम किससे represent कर देते हैं? Delta. So this becomes here delta v upon delta this one. So this will give what here? Average acceleration. And how can we find the instantaneous acceleration? When this delta t becomes very small, then whole this average acceleration becomes instantaneous acceleration. अगर ये डेल्टा टी को हम बहुत छोटा ले लें, बहुत छोटा को मतलब डेल्टा टी टेंस टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, अगर ये डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाएगा तो उस समय यही एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. एंड दैट इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो. यहाँ हम दे रहे हैं कि ये टाइम डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए, तब ये डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, whole this term is called instantaneous acceleration A, which is also represented by dv upon dt. So this one is the average acceleration delta v upon delta t, and this one is instantaneous acceleration A is equal to limit delta t tends to 0. जैसा मैंने बताया, इस डेल्टा t को हम जब बहुत छोटा लेंगे तब यही पूरा टर्म हमारा क्या बता देगा? Instantaneous acceleration. And delta v upon delta t, limit delta t tends to 0, and whole this term is also written as dv upon dt. As you know acceleration is a vector quantity, velocity is also vector quantity. Also you can write here vector a, here also you can write here delta vector v vector a, but later I will tell you what is a vector, then you will write here vector. And as you know, the SI unit of acceleration is meter per second square, and its dimension is LT to the power minus 2. And now I am going to discuss about some graph like time displacement graph. And if the time displacement graph of any object is given, then with that graph, what conclusion you are getting here? Means how can we find the velocity of that object? So I am going to discuss about the time displacement graph. Now, time displacement graph. If we will take or if we measure the displacement of any object with respect to any reference point, किसी reference point मतलब किसी origin के point को लेकर के, किसी origin destination को लेकर के, अगर हम किसी body के displacement को measure करें different time पे, then the graph between time and displacement, or then we will draw a graph between time and displacement. That graph is simply called time displacement graph. Suppose जैसे हम ले लें, ये हमारा origin हो गया,
और हम ले रहे हैं किसी टाइम t1 पे ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, टाइम t2 पे यहाँ है, टाइम t3 पे यहाँ है, टाइम 4 पे यहाँ है। इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुआ। तो when we draw a graph between time and displacement, so that graph is called what here? Time displacement graph. Here, we will take the time displacement graph by taking the displacement on y-axis and time on x-axis. I hope maybe all of you draw the graph in the class 9th and 10th. ये कोई नई चीज नहीं है, you know. So here, if we will take the displacement on y-axis and time on x-axis. And suppose if this graph is a straight line, if this graph is what here? A straight line. And this straight line graph represents that the body is covering equal displacement in equal interval of time. And if the body is covering the equal displacement in equal interval of time, it means the body is moving with the uniform velocity. बॉडी किससे चल रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। याद रखिएगा, इफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब द बॉडी इज कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मींस द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले तो उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा सब कुछ क्या रहती है? सेम रहती है। And with the help of the displacement time graph, we can determine the several things. For example, first means what can we find with the help of this displacement time graph? So first, with the help of this displacement time graph, what can we determine? First, determination of velocity from time displacement graph. इस time displacement graph से हम कैसे velocity निकाल सकते हैं? तो suppose if the time displacement graph is given in a straight line like this, then the slope of this line with the x-axis, slope मतलब झुकाव, पढ़े होगे, you have also studied in the class 10, slope means tan theta, या पढ़े होगे ना, equation of a straight line y is equal to mx plus c, तो वहां पे m क्या है? slope है उस straight line का, और उस m को और क्या लिखते हैं? tan theta. So if displacement time displacement graph is a straight line, then the slope of this line with this x-axis will give its velocity. इसका मतलब इस straight line का जो slope होगा x-axis के साथ, जो झुकाव होगा इसका इसके साथ, हाँ, वही क्या कहलाएगा? इसकी velocity. लेकिन यहाँ पे तो कोई एंगल दिया नहीं है। अगर एंगल दिया होता तो इसका स्लोप आप डायरेक्ट निकाल लेते tan थीटा करके, लेकिन यहाँ पे तो थीटा दिया नहीं है। Then how can you find the slope और how can you find the velocity? तो velocity निकालने के लिए हमको इस लाइन का क्या निकालना पड़ेगा? slope निकालना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करेंगे? How can you find? You consider any 2 point on this line. इस लाइन पे कोई 2 पॉइंट आप ले लीजिएगा। And suppose one point is A and this point is B. ये 2 पॉइंट हमने ले लिया इस स्ट्रेट लाइन पे। और मैं क्या बताने जा रहा हूँ? I am going to tell you the method how can you find the slope of a straight line. You consider any 2 point. Suppose A and B is the 2 point on this straight line. Now you draw the perpendicular from these 2 point on time axis means x axis. इन दोनों पॉइंट से पहले एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए किस एक्सिस पे? x एक्सिस पे। और देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने पे ये इसको कहाँ कट किया? मान लो यहाँ पे T करते हैं। And again we drop the perpendicular from point B on x-axis, और इसको कहाँ कट किया? x-axis पे T करते हैं। Again we drop the perpendicular from point A on y-axis, इसको यहाँ से ऊपर, और मान लो ये कहाँ कट किया? इसको S1 पे। And again we will drop the perpendicular from point B on y-axis, और मान लो इसको कहाँ कट करना है? You extend this one, इसको आप बढ़ा दीजिए, इस लाइन को बढ़ा दीजिए, and suppose this point is C. Now yes, look here, ABC is a right angle triangle. ये क्या मिला हमको? एक right angle triangle. और हम जानते हैं स्लोप क्या होता है?
tan थीटा। तो अगर इस एंगल को हम थीटा एज्यूम करते, इसको अगर हम थीटा लेते तो ये भी एंगल थीटा होता। और ए बी सी में अगर हम tan थीटा निकालते तो tan थीटा क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू, अब मन में रखिएगा स्लोप का मतलब क्या है? tan थीटा। बट दैट tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच हियर? यू विल राइट perpendicular means BC upon base means what here? AC. And what is this BC? BC is this one. So this one is equal to S2 minus S1 upon AC. AC is this one. This one is T2 minus T1. T2 minus T1. It means slope of this line AB is what here? S2 minus S1 upon T2 minus T1, which you can calculate by taking the value of S2, S1, T2 and T1. And in this way you can find out the slope of this line. And already I have told you, the slope of this time displacement graph will give what here? Velocity. तो यही slope क्या बता देगा उसका? Velocity. So S2 minus S1 can also be written as delta S. And T2 minus T1 you can write here delta. And you know the slope of this time displacement graph अभी क्या बताया था मैंने? यही slope क्या बताएगा? Velocity. तो at place of this slope simply you can write here velocity v. यही slope ही इसका velocity का है. और this is equal to delta s upon delta t. And delta s, as you know, either in meter, delta t in second. So this becomes meter per second. And in this way you can calculate the velocity with the help of displacement graph. Second point, greater is the slope of time displacement graph line, greater is the velocity. अभी हमने बताया कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा? उस बॉडी की वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या है? ग्रेटर इज द स्लोप ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ लाइन, ग्रेटर इज द वेलोसिटी। सपोज इफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज गिवन टुगेदर ऑन द सेम ग्राफ, जैसे ये किसी ऑब्जेक्ट ए के लिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है और ये किसी ऑब्जेक्ट बी के लिए टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। तो आउट ऑफ दीज टू ग्राफ लाइन ए एंड बी, whose slope is more? whose slope is more means कौन ज्यादा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और जिसका एंगल ज्यादा होगा तो उसके लिए tan थीटा भी ज्यादा होगा। इट मींस द स्लोप ऑफ ए इज मोर देन द स्लोप ऑफ बी। इट मींस द वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ बी। ग्रेटर द स्लोप of time displacement graph line, greater will be the velocity. And here, suppose displacement time graph is parallel to the time axis. Parallel to the time axis means अगर ये displacement time graph line time axis के parallel है, कि time से कितना एंगल बनाएगा? क्योंकि दोनों parallel है 0 डिग्री, और 0 डिग्री बनाने का मतलब क्या हो गया? कि इसका स्लोप होगा tan 0 और tan 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, देन द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज 0। इसका मतलब उस बॉडी की वेलोसिटी क्या है? 0 है। हाँ, और बॉडी की वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या है? कि बॉडी इज इन रेस्ट। हाँ, बॉडी इज इन रेस्ट। So you can say if displacement time graph of any object is parallel to time axis, then the velocity of that object will be 0, or in other word you can say here that the body is remain in rest. Now next, if the graph line makes an angle greater than 90 degree, and remember this, if the graph line makes an angle equal to 90 degree with the x-axis or time axis, then the velocity becomes 0. But here, if the graph line makes an angle greater than 90 degree with the x-axis, then in this case the slope is negative. Slope negative means their velocity of that object v also comes negative. And negative slope
are negative velocity, it means the object is returning back towards the reference point, or the object is going in reverse direction. हाँ, जिस डायरेक्शन में जा रही थी उसके उल्टा चलने लगी। जैसे यहाँ पे if displacement time graph is suppose given like this, and suppose this line makes what angle theta, and now this angle theta is greater than 90 degree, and when you will calculate the slope of this displacement time graph in this case, then that slope becomes negative. And if the slope of displacement time graph is negative, means the velocity of that object is negative. लेकिन याद रखिएगा, नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब कि द ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग बैक टुवर्ड्स द रेफरेंस पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट की तरफ से जो रेफरेंस पॉइंट मान के आप आगे चले थे, उसी पॉइंट की तरफ ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, वापस जा रही है, रिवर्स जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट, if the time displacement TS means time displacement graph of a moving object has several lines of different slopes, it means that at times velocity of the object changes. जैसे this one is a time displacement graph and this graph consists of different lines, then it indicates what here? यहाँ से देखिए, O is suppose reference point, reference point means origin जिसको आप लेना है, and O to A represent a straight line, and this straight line shows that the object is moving with uniform velocity away from this reference point in the same direction. It means first 0 to 2 seconds, the body moves a distance of 3 meters from this reference point. Again, you see from A to B. A to B is also a straight line, and A to B means from 2 to 6 seconds. So from 2 to 6 seconds, the object is also moving from 3 to 5 meters in the same direction from the reference point, but in this case AB velocity is less than the velocity in O to A. क्यों? क्योंकि O से A का स्लोप A से B के स्लोप से ज्यादा है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ही वेलोसिटी बताता है। इसका मतलब OA के दौरान इस ग्राफ का स्लोप ज्यादा है किससे, AB से। तो both OA and AB are straight line, represent that the body is moving away from this reference point in the same direction, but the velocity along AB means for this graph is less than the O to A. Again, from B to C. B to C means B means from 6 second and C means 12. From 6 to 12 second. From this one, this line BC is parallel to time axis. It means for this BC, slope is 0. Slope is 0 means velocity is 0. And velocity 0, then you can say the body is remaining in rest. इसका मतलब टाइम 6 सेकंड से लेकर 12 सेकंड तक बॉडी 5 मीटर पे ही रेस्ट में है, वहीं पे रहेगी। एंड फ्रॉम 12 to 14 seconds, the graph line is CD, which makes angle more than 90 degree with the x-axis. It means its slope is negative. And already I have told you, if the slope of time displacement graph is negative, it means the velocity is negative, and negative velocity means the body is returning back towards the reference point or towards the origin. So if the graph is given the several lines, so on the basis of these lines you will get a different idea about that graph. If the time displacement graph of an object is a continuous curve, here not a straight line, suppose this graph is a continuous curve, this one. Suppose this graph is a continuous curve, then it means the velocity of the object is continuous changing. क्यों? क्योंकि अगर टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एक continuous कर्व होगा, तो कर्व के हर जगह उसका स्लोप अलग अलग होगा। अगर स्लोप अलग अलग होगा तो उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। And with the help of this such type of the graph, we can find the average velocity of that object in any interval of time,
as well as the instantaneous velocity. जैसे हमने कहा कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसी ऑब्जेक्ट का ये दिया गया है और हमको निकालना है व्हाट इज द एवरेज टाइम बिटवीन टाइम t1 टू t2। तो आप करिए क्या, टाइम t1 से इस कर्व पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, मान लीजिए मिल गया किस लाइन पे, p पे, and again you drop the perpendicular from time t2 to this curve and suppose it cut the curve at point q. So for finding the average velocity between time interval t1 to t2 you join these two lines, जहां पे t1 और t2 इस कर्व को कट किया है उस लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, this one is a straight line and the average velocity in time interval t1 to t2, this one is given by v bar is equal to what here, slope of line, इस जो स्ट्रेट लाइन जो मिला रहे हैं p और q को, इसी का स्लोप निकाल लीजिए आप, स्लोप ऑफ लाइन pq. And how can you find the slope of the line pq? As you know, slope of this line pq is delta s upon delta t. So simply you can say here the slope of this line is equal to delta s upon delta t. So in this way you can find the average velocity in time interval t1 to t2. And how can you find the instantaneous velocity? So you know, when this delta t becomes very small, अगर ये delta t tends to 0 हो जाए तो ये हम पा जाएंगे यहाँ से instantaneous velocity v is equal to limit delta t tends to 0 delta s upon delta t, and whole this term is also given by ds upon dt. और इस तरह से हम पा जाएंगे इसकी क्या, instantaneous velocity means at any time t the velocity is calculated by ds upon dt. So in this way, by observing the nature of time displacement graph you can determine what either the velocity of that graph, or if suppose time displacement graph of two object is given, then also you can find out whose speed is more, whose velocity is more. If the time displacement graph is parallel to the time axis, it means the velocity is 0 or the object is in rest. And if the displacement time graph is makes an angle more than 90 degree with the x-axis, it means in this case the slope is negative. Slope is negative means velocity is negative, and already I have told you negative velocity means not negative acceleration. Negative velocity means the object is returning back towards the reference point. So dear student, today you go through the different type of the graph with the help of also the diagram which is given in your book, and in the next video I will give you the acceleration time graph. So in the next video I will give you the time velocity graph.